I wanted to expand my horizons. I wanted to learn more of the craft. The director is responsible for everything on screen. And the actor तो एक aspect है. So I wanted to learn more and मैंने ज़्यादा ड्रामे नहीं किए थे. मैंने को 3-4 projects करके मैं चली गई थी. And I studied there for a long time and then I fell in love with LA also. LA was an amazing place. I miss LA so much. आप सोचें कि जब मैं वापस आई फिर I was with Nadeem Beg at Arch TV. I did Indus. Then I did some freelance work. I did a telefilm 27th Street. Is that where you met your husband? I met my husband in 2005. It was much later. Okay. I came back in 2003. तो फिर Arch TV में I was working उसके बाद पहले Indus था. Indus के बाद I met my husband Fahad. And he was my associate. Then he was directing a project and I was the host in it. He was the director and I was the talent. And it wasn't a love story. I look at that smile of yours, na? It wasn't really a love story. It was love from his side, but I didn't know. I know the entire story. So why I also bring that up, and we'll just briefly talk about it because and what I mentioned in my intro as well, why your life and you as a human being are so inspirational. Because the way that you battled a disease for a considerably long period of time. Yes. You've spoken about it in detail. I don't want to get into those details Yes. as well. But you've also said that during that time, your husband was really there throughout. He was my rock. He was your rock. Yes. तो वो जो लैला जी पूरा एक मैं आपकी वो जर्नी सुन रहा था, आपने बड़े डिटेल में एक प्रीवियस इंटरव्यू में पूरी बात की थी जी. मुझे सिर्फ सुनते हुए हो रहा था कि यार कि व्हाट इज दिस वुमन सीरियसली आई वाज लाइक क्योंकि आपने बताया कि कैसे पहले कैंसर आपने बैटल किया उसके बाद द एंटायर थिंग विद द ब्लड जब आपके सिस्टम में उन्होंने ब्लड पंप किया जो कि आपका ब्लड ग्रुप नहीं था बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो जो टक्कर लड़ाई होती है आपस में उसमें दैट मेड योर बोन्स रियली वीक. तो पहले आपकी हिप रिप्लेसमेंट हुई फिर हिप रिप्लेसमेंट की वजह से 2 surgeries of my hip and completely replaced for years on crutches and walkers and then because इधर दर्द था तो इधर वेट डालते हैं तो राइट नी भी फिर डैमेज था तो पता नहीं था मुझे तो वो फिर कोलैप्स हो गया था. And as a matter of fact, your shoulder also gave in when your mother passed away. Yes. So डैमेज तो था तो वो जब स्ट्रेस हुआ तो वो फिर जस्ट कोलैप्स जस्ट मैं सिर्फ ये बातें सुन रहा था और टू बी ऑनेस्ट लैला जी जिस शुक्र के साथ आप वो बात कर रही थी हर मोमेंट पे अल्लाह का शुक्र अदा करके that अभी Allah भी has हर लम्हे even every step that I'm taking right now is मैं आपको बताती हूँ अभी this is April and December में मैं अभी बहुत बुरी तरह गिर भी गई. I fell down at a set really badly. Now look at how Allah works. So ऐसा step था एक white ऐसे marble था step था I didn't see it I flew and fell. Had I fallen on my ankle, my knee or my broken shoulder, it would have smashed. Where did I fall? On my titanium hip. All my weight was on my hip. And ये हुआ कि वो hip पे गिरने से muscle, tissues, rupture, सब पूरा blue हो गया and everything. I couldn't walk for a month and a half. And I was on bed rest. I couldn't even lift my leg. I had to lift it up with 2 people to put it in bed. So I was just amazed कि हाँ ट्रायल आना है वो अल्लाह की तरफ से ही आना है हर एक की लाइफ कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में ट्रायल नहीं है बट ट्रायल आना है एंड लुक एट हाउ ही हेल्प्स यू. अगर फ्रैक्चर्स हो जाते तो क्या होता सो यू जस्ट से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड लुक एट द टीम आई वाज वर्किंग फॉर MD फॉर हम TV and Mahesh and the director Kamran Akbar Khan and all. I said it's been one day मेरे 7-8 सीन हुए just replace me I won't be able to come. मैं तो हिल ही नहीं पा रही हूँ खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ and they said no we won't replace you we'll wait for you. मैंने 1-2 हफ्ते के बाद भी कहा I'm not better it'll take a month and a half and so you know Allah Miya makes things easy for you जहाँ आपको
it's what you focus on in life. If you focus on the negativity, all you'll see is negative. If you focus on the positivity, then you'll only see Allah and His light. That's all. हम सब इंसान इतने कमजोर हैं. Was there at all a moment during all these years where you were going through this illness and ये सारे problems और ये health के issues where you felt like giving up and you said Allah Miya bas? I've spoken in some interviews. I'll tell you what I haven't spoken about. दो points ऐसे आए थे where मेरे लिए सबसे ज़्यादा painful था to see my husband in pain because of me. Because men tend to be fixers, as I always say. What are you, Laila जी? उस point पे भी आपको ये तकलीफ थी कि मेरी तकलीफ matter नहीं, मुझे करनी. No. When they told me I had 48 hours to live, I thought about Ammi, Abbu and Mera Miya. And I told Allah, I said, Allah Miya, you gave it, you will fix it. Shukr Alhamdulillah. So this was the first time when you discovered that you had cancer. Yes, when I was diagnosed. Yeah. When I got off the helicopter. So दो points ऐसे आए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी जब मेरे मियाँ जब उस हॉस्पिटल की तरफ जाते थे ना, जब मैं हर हफ्ते जाती थी या मैं वहाँ थी 3-3, 4-4 महीने एट अ टाइम, उनका फेस पेल हो जाता था. टर्न करते थे, हम लोग 1-1 घंटे की राइड लेते थे, ड्राइव करते थे, वो मुझे लेके जाते थे, उनका फेस येलो हो जाता था वहाँ ले जाते हुए. I just saw that and I said, I tried to get, I couldn't drive, so I tried to get access to a service in LA जो कि patients को rides देते हैं at a cheaper amount. वो 3 घंटे की ride हो जाती थी जो 1 घंटे की थी, क्योंकि वो pick drop ride होती थी. I used to prefer those 3 hours going to 3 hours coming for that 1 second जो मेरे मियाँ के चेहरे पे जो रंग उड़ जाते थे. I did that instead. तो जब मैं जाती थी तो वाकई थक जाता है इंसान जब आपका वेट इतना कम हो, आप इतने वीक होते हैं. 2 दफ़ा ऐसे हुआ था कि शायद मेरी टोन में कोई कंप्लेनिंग टोन आई हो कि मैं खुद से जैसे अल्लाह मियाँ आज बहुत दर्द है, अभी मैंने ये देखा ही था तो सामने को बच्चा था जिसकी टांग नहीं थी, तो अल्लाह मियाँ मुझे नाशुक्रा होने भी नहीं देते. और एक दफ़ा और हुआ था कि सुबह के 5 बजे मुझे जाना पड़ा, 3 घंटे राइड, पिक ड्रॉप, गाड़ी में बैठे हुए पहुँचे हॉस्पिटल एंड मैं फ़िज़िकल थेरेपी के लिए गई और समथिंग एंड देन आई सॉ स्पेशल नीड्स चाइल्ड गोइंग थ्रू द सेम फ़िज़िकल थेरेपी. आई सेड शुक्र अल्लाह. सो नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज़, आप अब मैं एक तरह से डिसेबिलिटी ही है विद माई हिप रिप्लेस, नी रिप्लेस, शोल्डर, वीक बोन्स एंड एवरीथिंग, बट आई एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं कोई बहुत ग्रेट इंसान हूँ. आई व्हाटएवर आई से इन माई इंटरव्यूज, आई हैव डन अ फ्यू अदर्स, व्हाटएवर आई से इन माई इंटरव्यूज इज बिकॉज आई वांट कि अगर कोई बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज वर्स ऑफ देन यू. देयर इज ऑलवेज समवन हु इज वर्स ऑफ देन यू. So then when I started getting better, I started, and I've said this in another interview as well, I started volunteering for disabled students. मेरी disability अपनी जगह, I was still better off than people who could not see, people who could not hear. So I started volunteering for exams, people जिनके हाथ जो पेन नहीं पकड़ सकते, जिनके हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं, तो मैं उनके लिए वो बोलते थे एग्ज़ाम और मैं उनके लिए स्क्राइब करती थी. जो सुन नहीं सकते थे मैं उनके लिए क्लास में नोट्स लेती थी, जो देख नहीं सकते थे मैं वर्बली बोलती थी. उनके एग्ज़ाम्स में 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स होते थे एंड आई यूज्ड टू राइट फॉर देम. सो दिस ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू. वो एक कोई चीज़ लाइफ में, इफ़ दे लाइक आई यूज्ड टू बी अ रनर इन स्कूल, इफ़ आई कैंट रन डाउन स्टेप्स एंड इफ़ आई कैन नॉट be fast enough in life because of my differently abled body now. There are 5 things I cannot do. I cannot sit on the floor like chokri maar ke. There's just a small thing for other people, but I can't do that anymore. I don't focus on the 5 things I cannot do, and I focus on the 95 I can do. So that's just it.
I'm going to ruin my life and ruin myself and ruin people around me by being negative and complaining about the 5 things I can't do. I don't focus on it. Yeah, I do look at people who just खड़क करके बैठ जाते हैं ज़मीन पे and I'm like, oh, but then that's it. That's just about it. And then you move on. Because this time that I was given 48 hours to live, I'm on bonus time. I can't waste my time thinking of negativity. You're so You're so like quiet. because Laila ji, you're so incredibly inspirational. It's all Allah. It's your nothing to life do and with me. your journey. I just hope कि जो लोग देख रहे हैं और जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी गुजरते हैं और कोई दुश्मन को भी वो पेन ना मिले जो मुझे मिला था, कोई दुश्मन को भी ना मिले, कभी भी नहीं. बट जो भी आपकी लाइफ की ट्रायल है, there's nobody without, there's no person on this earth जिसका कोई ट्रायल ही नहीं है.